Welcome to PLUTUS IAS. I am Nishant Sir. Welcome you on the YouTube lecture of PLUTUS IAS current affairs classes. And let's start our first topic for today. It's current affairs class. That is National Conference on Handlooms and Handicrafts 2025. Starting a future for India's craft economy. So why handlooms and handicraft in news? The National Conference on Handlooms and Handicraft is being held in Bhubaneswar, Odisha on 31st of October 2025. Have you seen this? Yeah. So, the meeting on 31st of October to 1st of November 2025. 1st of November 2025 is a meeting on handloom missions organized by anyone know about this? Organized by Development Commissioner, right? Development Commissioner from Handlooms and Handicrafts. Okay, Ministry of Textiles. The handlooms and handicrafts come under Ministry of Textiles. Okay, got that? The event aim to bring together policymakers, artisans, industries, stakeholders to frame a future roadmap for India's handloom sector, okay, or handmade sector. Okay, सबको समझ में आया इस तरह? Yeah. So this is the main purpose. Event aim to bring together policymaking, artisan, and industrial stakeholders to discuss the future roadmap of India's handloom and handicrafts sector. Right? This is the conference consultative meeting on formation of new India. Now the significance. Let us first of all talk about the ministerial part, right? This organization, handlooms, Development Commissioner of Handlooms and Handicrafts come under the Ministry of Textiles. Okay. Now, what is the mandate of this ministry? Can anyone tell about this thing? Yeah. So the objective of this is promotional, right? Promotion and development. And development. Promotion and development of the textile sector. Okay, promotion and development of the textile, including अब textile sectors में क्या क्या आएंगे, including handlooms and the crafts, right? Handlooms, handicraft, sericulture, jute, wool, है ना? लिख लो wools, jute, sericulture, ये सब आएगा टेक्सटाइल के अंदर, right? Now the implementation of schemes
for skill upgradation, marketing, infrastructure, and export promotions, right? So major schemes are work for skill development, market, infrastructure, hmm, infrastructure, skill development, market, infrastructure, skill development, market of infrastructure. Okay. Digital promotions, right? All this come in these sectors, and the main implementation of schemes for the skill upgradations, marketing, infrastructure, exports, promotions, like that. Okay, digital promotions. So these are the main objective of the schemes. Okay, the outcomes from we got it from all the schemes, right? Now, ensuring the social and economic upliftment of the artisan and weavers through sustainable livelihood, we do all these practices for that reason is for socio-economic upliftment of artisan and weavers. This is the main whole objective of this ministry, their work, their schemes, objectives, and all. Now, the objectives for the national conference. The national conference course aim is to create a unified platform for policy making, right? Briefed and unified platform for the policy making for the artisan, right? Designers, industrial experts, है ना? तो क्यों करते हैं ये सब चीजें? टू डिस्कस द फ्यूचर रोड मैप ऑफ इंडियाज हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स, राइट? हाँ, अब अगर अभी बार डिस्कशन करेंगे, इफ वी डिस्कस्ड over here, so regarding what? To the future perspective, right? कि फ्यूचर्स को एक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होंगे, राइट? So the twin objective of this thing is that the understanding opportunities and challenges, first of all, in these discussions, the opportunity and the challenges for the handloom sector, right? Such as like export potentials, technological upgradation, sustainability. Yeah, this all comes under this, right? The second thing is deliberating on the upcoming holistic developmental approach or scheme, right? So in that, a new integrated initiatives, right? A new integrated initiatives to modernize, empower artisans under Viksit Bharat Edit 2047. Please note this thing, Viksit Bharat. You have to relate it with all the sectors, right? This is an indigenous sector, Atmanirbhar Bharat, right? They're not dependent on anyone or handlooms and handicrafts. The key working area. What are the key working area in that? Let's see.
Now, the key working area. In that, the working areas is like policy dialogues, right? Design and technology, market linkages, skill entrepreneurship or development, skill development, entrepreneurship development, cluster based development, sustainability and green productions, है ना? Now, एक एक करके we see all these things. First of all, policy dialogues. What is policy dialogues? First of all, policy dialogues. In that policy dialogues, we discuss between the center and the state government and the NGOs, private players to identify policy gaps. Right? In this policy dialogue, we discuss all this thing. Gap between center and state, NGOs, private players, etc. ओके, इसमें जैसे पीएम विकास फॉर एग्जांपल, पीएम विकास आया. Now the second thing is design in technology upgradation. In this design and technology upgradation, we're introducing the digital designs, right? We're including the digital design like tools like AI driven, AI assisting viewing, and eco-friendly. और इसमें क्या एग्जांपल लिख सकते हैं आप? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द कैट सॉफ्टवेयर इन वाराणसी? ओके, आएगा. Third thing is market linkages. In market linkages, what we do is strengthening our domestic market. Strengthening our domestic market, take all the domestic products to the international level, right? Fair marketings, e-commerce. So third thing is market linkages. Upgrade domestic market, e-commerce, right? Linkages and all the things. Launching of handlooms, India's handlooms. Uh, there's a program, India handmade. Sorry, handlooms. Check this in your phones about the India handmade e-handloom or e-marketplace for artisans. Right?
It is a e-marketplace for artisans, India handmade. In that, right? So we upgrade or strengthening our domestic market over here. Now the skill entrepreneurship and development. In that skill entrepreneurship and development, what we do, we promote youth, right? We promote youth participation through training under Samartha and PM Vikas. Okay? You know about Samartha and PM Vikas? Anyone? First of all, I wrote over here. Okay. In Samartha, what is the full form of Samartha? Can anyone? Acha, I wrote over here. Can anyone tell about me? Can anyone tell me about Samartha? No. It means scheme on the full form of Samartha is the scheme for capacity building for the textile sector. Okay, the scheme for capacity building for textile sector. Scheme for capacity building sector. This is the main full form of Samartha. Right. Up now we can see the name scheme for capacity building for textile sector, launched by Ministry of Textile. Anyone? Up the objective is what, to skill, reskill, and upskill the workforce in the entire textile value chain. Now, excluding what, shipping and weaving, ये spinning and weaving होती है जो, हाँ, उसको exclude कर रहे हैं इसमें से, with the focus of handloom craft, handlooms, handicraft, sericulture, jute, and apparel sectors. Right? It aimed to make artisan and workers industrially ready, promoting employment and self-employment and entrepreneurship. Right? This is the main aim for this. Okay. So the key working area for this is, the key working area is skill training. First of all, the key working areas is skill training. Provide what? Provide skill development training to unskilled and semi-skilled workers. Okay. Now the second part is women empowerment. In that, special focus for the women's workers, artisans who already possess traditional knowledge.
right? Okay. Recognitions for prior learning RPL. ठीक है, certify skills to existing all the workers and artisans who already possess traditional knowledge, right? Industrial participations, placement for entrepreneurships, in that linkages with the industries for job placement, self-employments. So these all are comes under these things, right? This is the Samartha scheme. Okay? Now everyone know about the Samartha, right? Now, okay. Up the second thing is the cluster-based development. Another point. Cluster-based development. In this cluster-based development, we can see creating self-sufficient artisan clusters, right? With common facilities, all the common facilities. We can see there is an example of Kutch embroidery clusters in Gujarat as a successful model in that Kutch. You can write here. Kutch model. Okay. So these all are the main key working area where we focus, where in the conference they focus in all these key working areas. Right. Now, sec- next thing, major hubs, products, Surat, Varanasi, Agra. These are the major hubs regarding this growth driven. Oh, now the example and the government program discussions on the conference. अब कौन सी चीजें डिस्कस्ड हुई होगी, ये चीज का जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उस चीज को एक ब्रीफ मैं एड्रेस कर देता हूं, जिसमें आएगी सबसे पहले नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, NHDP, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है. Can I even see? सबको दिख रहा है ना ये? You can see this था, और मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ. Now, what is the object of this National Handlooms Development Program? To support for raw materials, design innovations, and marketing. Like, समझ में आया? The main objective of this scheme is to support raw material, market innovation, to support raw materials. The raw material like jute. What are the raw materials for these things? Can anyone tell about me about that? Hmm? तो क्या हो सकता है बताओ? कॉटन, सिल्क, जूट,
wood, bamboo, clay, cane, metal, ये बट हैंडलूम्स में नहीं आएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स में भी आ जाएंगे. हाँ, सो इन मेजरली हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, so this all are the main raw materials. Works under Ministry of Textiles. ठीक है. सो अब सबको पता है ना क्या ऑब्जेक्टिव है इसका. नाउ द सेकंड थिंग, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम सेम है. अच्छा लग जाता हूँ. रॉ मटेरियल, जूट, second, same thing or not? क्या गेस कर सकते हो? Different thing. In this, we give a cluster based artisan development. Okay. क्लस्टर बेस्ड आर्टिशियन डेवलपमेंट से क्या समझ रहे हो बताओ? Can anyone tell me about the cluster based artisan development? Training or designing, marketing, majorly on this cluster based development we will specify with a specific geographical area. We are providing them the collective supports like infrastructure, training, skill development, innovation, marketing, all these things. So this is the proper example for the cluster based artisan development, right? Comes under same Ministry of Textile, right? Now the third thing is what? PM Vikas. Anyone know about the PM Vikas? प्रधानमंत्री PM विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, the full form of PM Vikas. Now the PM Vikas, what is the objective of PM Vikas? Can anyone tell me about PM Vikas? In PM Vikas, Vishkarma Kaushal Vikas, we go on the words, the recognition, upliftment, and financial aid to the traditional artisan. This is the main objective. Recognition, financial aid to traditional artisan. Objective of this. Now, recognition and upskilling भी लिख लो. Upskilling
right? Upscaling traditional financial aid. What is the main thing about it? The recognition? The government formally identify and certify traditional artisan who engage in ancestral crafts, mm, called Vishwakaram. विश्वकर्मा होता है ना, ट्रेडिशनल आर्टिशियन से रिलेटेड थे. So regarding that, and what we provide them, we register that artisan received by the Vishkarma ID in PM Vishkarma certification. Like a blacksmith or potter from a rural area get official recognitions as a Vishkarma beneficiaries, right? Ancestry crafts. Okay. Upskilling, we will provide them training, modern tools, design, quality controls, digital literacies, right? Financially, तो सबसे को समझ लिया, collateral free loans. So all this about this PM विश्वकर्मा. Okay, सबको समझ में आया PM विश्वकर्मा क्या है ना? Now the third thing is Weaver Mudra scheme. Sorry, fourth. Schemes. Mudra means money. So, what is the objective of Weaver Mudra scheme? Provide concessional. Provide concessional credit to artisans. बेसिक है यानी वर्ड्स के साथ ही अगर हम जाए तो यही आएगा, है ना? नेक्स्ट इज समर्था. अभी बताया समर्था. What is the objective of समर्था? अभी बताया था आप लोगों को, है ना? कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द ट्रेनिंग आर्टिशियंस. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में है, ठीक है? उसके बाद और क्या आ सकता है इसमें? कॉम्प्रिहेंसिव क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैंडीक्राफ्ट का. कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ लिख देता हूँ. Comprehensive cluster development program. In this program, we are talking about the infrastructure, the technology, right, for the support of the artisans clusters. ठीक है? समझ में आ गया? This all are the government program discussion in that conference. यही सब लिखा है. नेशनल हैंडलूम प्रोग्राम, एसडीपी, पीएम विकास विश्वकर्मा, वीवीएस मद्रास समर्था. This all are very important in your prelims as well as
मेंस आंसर राइटिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, ये बताएगा? अब अगर मैं ये लिख रहा हूँ जैसे हाउ यू कनेक्ट योर PYQs एंड दिस थिंग, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। पता है किसी को इससे पहले कोई ने PYQs देखा है? GS1 इंडियन एग्रीकल्चर से आप कनेक्ट करोगे, हेरिटेज से कनेक्ट करोगे, आर्ट फॉर्म्स के साथ, साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर्स, एंशियंट इंडिया की सब कुछ, एंशियंट मिडिवल्स की। GS2 में कनेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड डायरेक्टली, इंटरवेंशंस, MSME सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, डिजिटल डिवाइड्स, लैक ऑफ क्रेडिट्स, पीएम पीएम विकास, समर्थ, NHDP, ये सारी डायरेक्टली आपकी GS2 से। GS3 से कैसे कनेक्ट करोगे बताओ? सबसे बेस्ट सेल्फ रिलायंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MSME, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, है ना? तो ये सब डायरेक्टली लिंकेजेस दिखेंगे आपको इसमें, चैलेंजेस, उसके साथ लिंकेजेस, सब कुछ। कंपटीशन फ्रॉम, ये सीधा सीधा यार, जैसे अगर इसमें चलो चैलेंजेस भी बताओ, तो चैलेंजेस क्या सिखा सकते हैं आप इसमें हैंडलूम सेक्टर्स में? कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड इंपोर्ट्स, मशीन मेड इंपोर्ट इतना हम सब कराते, राइट? सो उससे कंपटीशन, लो प्रोडक्टिविटी, design innovations, low design innovations, weak branding, poor GI programs, GI tags मिलते हैं ना वैसे ही, यूथ डिसइंटरेस्ट, यूथ आप लोग में से कोई करेगा हैंडीक्राफ्ट में काम? सो दिस इज द मेन थिंग, यूथ डिसइंटरेस्ट ड्यू टू लो इनकम। सीधी बात, अगर आपको इसमें अगर मैं 2-3 लाख रुपए की अगर मंथली इनकम, आप लोग ये करने लग जाओगे, है ना? तो यही चीज तो है कैपिटलिस्टिक मार्केटिंग। अब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, यूथ क्यों एंगेज नहीं कर रहा उस चीज में? If we do all the safai workers like ASHA workers, we are doing that safai working types, and if government paid us around 1.5 lakhs or 2 lakhs, we will happily join all the Atmanirbhar Bharat programs, right? So all the related sectors. Essay, sustainable growth through traditional knowledge, ऐसे आ सकता है यार। कल्चरल हेरिटेज, ये सारे पहले के लिंक है। जैसे 2017 2017 में ये हैंडलूम डे के ऊपर, नेशनल हैंडलूम डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है यू प्रीलिम्स में। नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे कितनी तारीख को होता है? 7 अगस्त। ओके, नेशनल हैंडलूम डेज। और 2023 में भी पूछ रखा है प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड। दो 2023 में इसका जीआई टैग का एक क्वेश्चन आया था, आप उसमें देखना कि हैंडलूम्स लाइक बनारसी ब्रोकोट टाइप से वाला जो नहीं था, उससे रिलेटेड था कि जीआई टैग से। तो जीआई टैग से रिलेटेड ये टॉपिक हो सकती है आपकी, नेशनल हैंडलूम डे से रिलेटेड। तो प्रीलिम्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चीज से। उसके बाद 2021 में पीएम मुद्रा पूछी गई थी, प्रीलिम्स में था ये भी। तो जो पीएम मुद्रा पूछी गई थी, पीएम मुद्रा किससे है? वीवर मुद्रा प्रोग्राम से, स्कीम से आप रिलेट कर सकते हो, राइट?
तो ये सब चीजें लिंकेजेस दिखा रहा है आपको डायरेक्टली यूपीएससी से इस टॉपिक की, है ना। तो ये फैक्ट है कि यानी इस टॉपिक से रिलेटेड वी सी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। और ये सिर्फ यानी प्रीलिम्स, अभी 2025 का ही क्वेश्चन ले लो आप। 2025 में वो इंडियंस को डिस्ट्रीब्यूटेड 95% ऑफ ऐसा कुछ करके आया था ना, वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट के ऊपर आया था, पीएम विकास स्कीम से रिलेटेड पूछ रखा था, है ना। पीएम विकास ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन था, आप 2025 में भी देख सकते हैं। ये हैंडलूम्स डाटा और आर्टिशियन वो हैंडीक्राफ्ट्स का कुछ क्वेश्चन था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जोड़ रखा था। तो क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स में देखे होंगे आपने, मेंस में भी मिलेंगे आपको। मेंस में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे 2021 का ये क्वेश्चन था, वो ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड करके, ट्रेडिशनल नॉलेज 2021 मेंस का क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड करके। उसके बाद 2019 यानी 20, 21, 19 इस टाइम पे बहुत क्वेश्चन मिले हैं, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में मिले हैं। हम्म हम्म। कैसे डिजाइन कर सकते हो अगर बाय चांस इस पे ट्रेडिशनल नॉलेज पे आ गया तो? डायरेक्टली लिंकेज कर दो आप हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर्स को इको फ्रेंडली सिस्टम्स के साथ, right? अब अगर इससे रिलेट कर दिया कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए एम्प्लॉयमेंट और किस तरीके से यूज हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी से भी, क्योंकि 2020 या 19 ऐसे कुछ का एक क्वेश्चन है जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को एम्प्लॉयबिलिटी से कनेक्ट किया रखा है। उसमें क्या आएगा, ये समर्थ पोर्टल, पीएम विकास आ जाएगा, क्लस्टर स्कीम्स हो जाएगी डेवलपमेंट, है ना, कि वही जनरेट एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट। एक क्वेश्चन था, वी सी द गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पूछ सकता है फॉर द ट्रेडिशनल सेक्टर्स इन लाइन, तो वही पीएम विकास समर्थ cluster, all these come under this questions. So you can see there is so much of linkages in your mains and prelims from this topic, right? So it is an important topic for you. Okay. Now the national conference aim, objective, tween. I already told you about these things. Yes, the challenges, competition from machine-made products and imports, limited access to formal credits. I already told you about all the challenges, है ना? The machineries and sub sectors, all these are connected to these topics from the collective perspectives. Oh, sorry, different perspectives of the traditional knowledges, traditional industries. Okay, चलिए, now कोई डाउट, any doubt? वो उसमें नहीं आएगा, वो सब लिंक कर सकते हो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में। हाँ, ये एमएसएमई से कनेक्ट करेगा, हाँ, आत्मनिर्भर भारत से एमएसएमई से सबसे कनेक्ट करेगी टॉपिक्स। यार एक बात बताइए, अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर अपलिफ्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे हम डिपेंडेंट, हमारा सबसे मैंने अंडर डेवलप्ड सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है। कल भी मैं शायद तक एग्रीकल्चर के उसमें बताया था कितना सारी एंगेजमेंट है, ये सब चीजें प्राइमरी सेक्टर से, हैंडलूम सेक्टर से, ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज सेक्टर, तो इनको रिप्लेस किसने, मशीन सब ने करी है ना। और चलो यार ये ले लेते हैं, कंपटीशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टेड गुड्स। लेट्स टॉक अबाउट आवर चैलेंजेस फ्रॉम दिस, इसमें तो
देखिए, द थिंग इज दैट mass production of textiles from China, Bangladesh, and power looms unit dominate the markets. We every we everyone know about this thing. अब now machine made fabrics are cheaper and more uniform, reducing demands and handmade goods. सो इसीलिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि प्राइस डिसएडवांटेजेस एंड लॉस ऑफ रूरल मार्केट प्राइसेस. इम्पैक्ट प्राइस डिसएडवांटेजेस. सेकंड, लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट. एंड इसका अब मोस्ट आर्टिशियंस आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स, राइट, मोस्टली, एंड लैक कोलेटरल एंड क्रेडिट हिस्ट्री. पैसे ही नहीं है भाइयों के पास. Dependency on money lenders, middleman, increased production cost. So अपने अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट इतना बढ़ गया है क्योंकि टैक्सेस ये सब देंगे तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. लो वर्किंग कैपिटल, रिस्ट्रिक्टेड स्केलिंग, इनोवेशंस के लिए पैसे ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उस साहूकार को देना टैक्सेशन में. ये चीज हो जाएगा इसका. मार्केट लिंकेजेस, एडुकेट डिजाइन एंड इनोवेशन एंड लो प्रोडक्टिव ऑफ मॉडर्न technology. क्यों? Traditional designs are often repetitive and not aligned with the changing market trends. समझ में आ रहा है? तो अब उससे चीज क्या होगा? लिमिटेड एडेप्टेशंस ऑफ डिजिटल डिजाइन्स, या limited access of digital designs and product diversifications also. तो ये चीजों का क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इन डिक्लाइन इन कम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स. ठीक है. नाउ डिक्लाइन इंटरेस्ट अमंग यंग जनरेशन इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट. इसका आप लोग बता दो. अभी इतने अच्छे से बताया था कि यंग पीपल्स माइग्रेट्स टू सिटी सीक्स बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज. सिंपल सी बात है. ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर सीन एज सॉरी इकोनॉमिकली इनसिक्योर, है ना. इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस चीज का, इस चीज के यानी इस माइंडसेट के ऊपर कि एगिंग आर्टिशियंस पॉपुलेशन एंड स्किल एरोजन्स. यही सही. अब रॉ मटेरियल्स के लिए रॉ मटेरियल्स इरेगुलर सप्लाई, राइजिंग प्राइस ऑफ क्वालिटी yarn, डाइंस, बैम्बू, वूल. अब इसका इतना सारा कॉस्टिंग इफेक्ट पड़ गया, सब कुछ हो गया, तो उससे चीज रॉ मटेरियल की सप्लाई सही से नहीं, इम्पैक्ट, रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन, प्रोडक्शन डिले. यही सब चीजें आएगी भाई. तो फिर वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? पॉलिसी कन्वर्जेंस, इंटीग्रेटेड स्कीम फ्रॉम टेक्सटाइल एमएसएमई इन रूरल डेवलपमेंट. सही बात है. टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन इनोवेशन, लेवरेज डिजिटल टूल्स एंड एआई बेस्ड डिजाइन प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, जैसे अभी बताया था. कैट सॉफ्टवेयर एंड Varanasi. Global branding, promotion Indian craft through Made in India label and global exhibitions. Skill enhancement, expanding training under Samartha and PM Vikas to promote sustainable production, encouraging use of organic raw materials and nature cluster-based developments. यही सब होंगे way forwards. So now you have a prelims question on this topic, like which of the following statement about India's handlooms and handicraft sector is are correct? India contribute nearly 90% of the world's handloom fabric. The Indian handloom held its 7th August. The Pradhan Mantri Vishwakarma Kaushal Samman Vikas aims to support digital literacy amongst rural youth. अब इसमें है जैसे 1 2 2 3 1 3 1 2 3. अब ये ट्रेनिंग पर्पसेस से है, अपग्रेडेशन मॉडल. डिजिटल लिटरेसी से इसका कोई लेना देना नहीं. 7th अगस्त अभी बताया, 95% ऑफ कंट्रीब्यूशन जो अभी बताया, तो ए आएगा 1 2. ठीक है.
Now, second question is related. Our main question is related to India's handloom and handicraft sectors. Not only represent economic potential but also embody cultural heritage and sustainability. Discuss the major challenges faced by these sector and suggest measures to enhance their global competitiveness. 15 marker question for you guys. Right answer on this question and send me on the Telegram channel of PLUTUS IAS. Okay, so that's all from today's news. Thank you and have a nice day, students, and work hard for your prelims examination as well as mains. Okay, and stay connected with me from this PLUTUS IAS YouTube channel for the current based topics and current questions. Okay, thank you and have a nice day.